So ConnectSoft Infotech is the ISO certified web development company as well as providing the corporate training. So we started from the 2016. So we are on from the 2016 we are in the business. Okay. So this is the class of software testing. First of all, I am going to tell you what the contents we are going to cover during this software training. That is covered manual testing as well as automation testing. What are the types of different tools we are going to cover? Okay. Also, we are covering what live projects as industry based project and live environments we are going to create here. Okay, so that you will get definitely you can go with the 1 to 3 year experience with manual, you can go with the 1 to 3 year experience with the automations, no problem. So we'll work on the real-time projects, we'll see how the project will work, how the test cases will take, how to uh, test scenario we can write, how to test cases we can execute, how to report the bugs, what is defect, what is bug, what is issue, what is an error. So all this clarity you will get. Okay, so first of all I am going to tell you about the class. Okay, so what are the major contents and what are the major highlights in this software testing course. Okay, so this is what software testing course, and this is purely 100% online course. And in this software testing course I am going to provide the, that is software testing, the course I am going to divide into the two parts. That is, first is what, manual testing. Okay, first one is what, manual testing, and second is what, automation testing. Okay, manual testing and automation testing. So in the manual testing, we are also covering with two real-time projects, 2 to 3 real-time projects I am going to cover, and we based on this project. So as a fresher or as an experience, the IT industry always asks the domain knowledge. Domain knowledge. Suppose you are claiming that you have the 1 to 2 year experience in the testing, that may be the manual or automation, that it doesn't matter. But they will ask you what is your project. So you can say my project is banking domain, insurance domain, okay, e-commerce domain. So they will judge you what is the flow of your project, give me the short intro of the project, and what is your responsibility in that project. Okay, so that things they will ask. So the domain knowledge are very important. So that's why I'm taking here the 2 to 3 live projects, that is banking project, insurance project, and if I get the time then I can cover the e-commerce based project. Okay, so testing is not just a listening. Okay, you have to say something, you have to communicate with me also. Okay, so that is, communication is very important, because as a tester developer you have to talk with the developer, you have to talk with the team lead, you have to talk with the manager, right? You have to communicate with the, and most of the communication we have to do with what, developers. Okay, so in the manual testing also we have the live project, and we are covering here what, agile methodology. Okay, and the scrum is what, framework. So 90% IT industry are using agile. Okay, 90% of the IT industry nowadays they are using the agile methodology. Okay, SDLC model. So this is what SDLC model. If you learn in software testing in academic, so you know the software development life cycle. Okay, there is a no end of the testers. Okay, there is a no end of the tester. ऐसा मत सोचो कि as a tester कौन करता है, there is a no vacancy and job, there are the huge job. Whenever there is a product, they must require the tester. Okay, जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे टेस्टर की ज़रूरत है. ओके, बट जैसे बिजनेस कुछ भी हो सकता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. ओके, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वॉट एवर,
So Dinshas do dairy, but they require a software. So that is software is developed. Okay. So also their developer required, also testers are required. Anywhere the testers are required. Okay. So in the manual testing, domain knowledge, and Agile Scrum, Agile is the methodology. 90% IT industry follows the Agile and the Scrum framework. Okay. Along with what I am going to take here one tool that is known as the Jira, and Jira is the most powerful tool. Okay. Jira is what most powerful tool. So that is what that follows the Agile methodology. Okay. It's the Agile management tool. Okay. What is Agile? What is Scrum? Everything will be covered. Don't worry. अभी कैसा फर्स्ट डे है तो आपको ये थोड़ा नया नया टर्म्स लग रहा है. डोंट वरी. ओके. once you start get writing the practice, okay, once we start doing the practice, then you will be aware about this one. Okay, this is just a demo class, don't worry. Okay. Now, so Jira is what? Agile management tool. So whatever the task you will get in the Jira. Also, if you found any defect in the application or any software, the product, okay, or a project, so you have to raise the defect or issue into the Jira tool. Also, you will get the task in the Jira. Okay, those who are in the non-IT background, IT background, okay, max they are using the Jira. Okay, so or there is a one tool HPLM. Okay, HPALM. So that is based on the client cost. इसका cost कैसा है, client कैसा है ना? That is dependent. Okay, वो बोलेंगे client बोलेंगे कि जीरा use कर तो जीरा. Okay, so if you know the जीरा, that is enough. Okay, no need to know about the HPALM. Okay, HPALM. Yeah, so no problem. Okay, so we are covering here the Jira. That is for what? Agile management. Okay, this is for what? Agile. Whatever the daily tasks you are going to assign to the Jira. Okay, or then it's also the test case management. Okay, what is test case, test management? Okay, what are the new terminology you will get? Okay, so you will aware about this one. Don't worry, today's day. Okay, आप ये क्या है, test case क्या है, management क्या है? Okay, so don't take any tension about this one. Huh? So the Jira is agile tool. Huh? Okay, so in this Jira, once we start the live project, so whatever we are going to test that project, and if you found any defect, so we can raise the defect to the Jira tools. So how it is work? Okay, in agile, what is Scrum meeting? What is sprint planning meeting? Okay, what is the review meeting? So definitely, as a fresher or as an experience, you will be definitely asked the questions in the testing interviews. Okay, so this is what test based management tool, right? So optionally, at the other company are using HPLM. That is dependent. Okay. So one tool is mandatory. That is Jira. Okay. And projects, live projects, test case, writing the test scenario, writing the test plan. What is the test plan? Testing strategy. Okay. And various SDLC models and what is the SDLC process we are covering. So that everything will be covered. Okay. Okay. Yes, Prashant. Right now you join. रिपीट करना पड़ेगा प्रशांत. Okay, so the test case management tool Jira is what? A test case management tool, right? So that will also cover in the manual testing. So now the question is arise what we are going to test. Okay, so we are testing the web application. ठीक है, हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? वेब एप्लीकेशन. So there is a huge vacancy for the web application testing. Okay, what is web application? What is mobile application? What is desktop application? Okay, I will give the clarity, don't worry. So we are covering what? Web applications. Okay, web applications. So manual testing, so how many days it will take? Okay, so 30 to 40 days will cover. Okay, for the manual testing. Okay, 30 to 40 days with 2 3 hours through Jira and live project explanation. Okay, two more class for the live project explanation. So whatever the project I am going to explain, so you can put the project in your resume. Okay, you can put the project in your resume, no problem. Okay, आप अपने resume में वो project ऐड कर सकते हो. कैसे ऐड करना है? I will review that one. Okay, मैं पूरा resume आपको review करेंगे. जैसे आप मुझे सबसे पहले resume provide करोगे आप, ठीक है, और मैं रिव्यू करूंगा उसको, मुझे लगा अच्छा है
तो आप फिर पोस्ट कर सकते हो। ओके, अगर मुझे कुछ लगा कि कुछ करेक्शन है, सो आई विल टेल यू व्हाट वी टू डू द करेक्शंस। ओके, तो जो भी करेक्शंस है मैं आपको बताऊंगा, कैसे प्रोजेक्ट लिखना है, कैसे करना है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दिस वन नाउ। So automation testing, what we are going to do, and nowadays there is a huge requirement of what? Automation testing. Okay, so the one popular post, okay, that is nowadays is trending, that is what? SDET. Okay, SDET means what? Most popular post. Okay, that is what? Software development. Okay, software developer. Okay, we can say software developer, engineer in what? Test. Okay, this is the most trending post. Okay, SDT. So to become an automation tester, automation QA engineer, okay, so you must have to know the strong knowledge in the automation testing. Okay, automation पे एकदम strong knowledge रहना चाहिए, then you can go for the automation testing. Okay, so here you can become a QA engineer. Okay, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, पोस्ट वॉट एवर। ओके, पोस्ट का मैटर नहीं करता है, वॉट इज द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द मैटर। रोल इज अ डिफरेंट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट थिंग, डोंट ऐड मिक्स टू विथ ईच अदर। ओके, दोनों को ऐड मत करो। जैसे कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या बोलते हो? रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने दो, मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ये ऐड कर डायरेक्टली ऐड कर देते हो और बता देते हो। ओके, role is a different, responsibilities are the different. Role means the post. Okay, what is your role? As a QA engineer, as a software test engineer. Okay, or as a software test engineer you can say. Okay, this is your role. And responsibility, writing the test cases, executing test cases, understanding the requirement, defect reporting, okay, attending the meeting, attending the sprint planning meeting. Okay, these are what? Responsibilities. So so whatever the responsibility you need to add in the resume, I will prepare you, I will tell you, okay, how we can add this. Okay, don't worry about this one. So you will get this role. Okay, you can apply for this role. So after the manual testing, okay, you can ready to apply for the industry. Okay, because I am covering here what? I am giving here for the fresher, that is a 6 month internship. Okay, certificate. So I am providing the 6 month internship certificate. Okay, so once manual testing is completed with the project, so means within the 20 or 35 days, means within the 25 or 30 days you can apply. Okay, and Naukri. Okay, I will tell you how, I will guide you how to go for the Naukri, how to apply for the job portals. Okay, Indeed. Okay, so you can mention in the LinkedIn, I am working, I am as an intern in software ConnectSoft Infotech. Okay, as a manual QA. Okay, so that you will get the more number of interviews, you can attend the more number of interviews, so you can get the things what you have to prepare in the interviews. Okay, जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे तब तक आपको लाइव सिनेरियो पता नहीं चलेगा। मैं तो आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट थोड़ा इंटरव्यू देने के बाद आपको और अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। Okay, up to the 6 month I am going to provide. Now come to the automation testing. So what are the tools I am going to provide in the automation testing? So right now I have told about what? SDT. Okay, there is a huge demand in the SDT. Okay, so कुछ भी प्रोडक्ट बने, टेस्टिंग टेस्टर का ज़रूरी है। ओके, सो हर आईटी इंडस्ट्री में, आईटी छोड़िए, हर इंडस्ट्री में टेस्टर की ज़रूरत रहती है। ओके, बाइक मैन्युफैक्चरिंग हो या कार मैन्युफैक्चरिंग हो, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टेस्टर के ऊपर। जब तक क्वालिटी एश्योरेंस का उसका स्टैंप नहीं लगता है ना, तब तक वो प्रोडक्ट जो है ना बाहर नहीं निकलता है। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस कौन देता है? क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। सो एश्योरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी का काम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वैसे ही क्लाइंट को जब भी हम नया एप्लीकेशन वर्क डिप्लॉय करते हैं या क्लाइंट कस्टमर के पास देते हैं रेडी टू यूज़ फॉर द यूज़र्स, तो वो बग फ्री होना चाहिए, वहाँ पे बग नहीं चाहिए, डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो काम है डिफेक्ट निकालना, बग निकालना, वो टेस्टर का काम है। ओके, सो जो टेस्टर है क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है, इसलिए देर इज ए नो एंड ऑफ द टेस्टर।
ओके, डेवलपर का एंड नहीं है, प्रोजेक्ट बनते जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना रहो, उनको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ऑटोमेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट है वो मैन्युअली वर्क नहीं करते अभी, ठीक है, सब ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, एनीथिंग हो, कुछ भी हो, एनी प्रोडक्ट, है ना, पाउंड्स पाउडर का डब्बा क्यों ना हो, उनके जो प्रोडक्शन है तो भी वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. So there is application, they require the development as well as the tester. Okay, but nowadays the tester having the huge demand as a SDT, means software developer tester, software developer engineer in the test. Okay, the post name is what, SDET. तो आपको बहुत सारे देखे होंगे, Python SDET चाहिए, okay, SDET जावा चाहिए, है ना, सो बूम कर रहा है ये, लेकिन ये सब आने के लिए आपको एकदम स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना, विच वन, manual testing, that is very very important. Okay, so in the automation testing, we are going to cover. Okay, so in the automation testing, that is what we are going to cover. Selenium WebDriver. Okay, Selenium, right? Selenium WebDriver. So Selenium is a WebDriver tool. Okay, this is used to automate the test case. Okay, so by using the Selenium, you can directly automate. Okay, you can execute a number of test cases, है ना, तो सब कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं. सो विथ जावा, ओके, सो विथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. ओके, द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. Okay, so the scripting is what we are going to take here. Java is a scripting language. Okay, so first of all I am going to tell you the one example automation. Okay, you know, this is the Java code I have written. Okay, so it is used to launch the browser. ठीक है, सो वन दो तीन लाइन की मैंने अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने, दैट मीन्स व्हाट, इट्स जावा. ओके, जावा कोड, only 2 3 lines of code I have written here to launch a web browser. Okay, so I'm just going to write here what, www.facebook.com. So what is going to happen, it will be launched automatically, it will launch what, Chrome browser with this URL, with the application. So just I'm going to right click on here, okay, and run this one. This is what automated. Okay, this is what automation. Okay, and now see, it's a building, 67%, 69%. Okay, you can see in the bottom. Okay, let us, is there any okay, something okay, yeah, right now it's started, server get started now. Okay, so you can see here the Chrome driver was started successfully, and automatically the web browser will open with the facebook.com. Okay, and it's having the some issue with him. Okay, yeah, so something is there. Okay, so once again I'm going to execute this one. Here I am writing this different. Okay, facebook.com. Yes, okay,
Okay, just wait for the few seconds. Okay, it's get hang. Okay, so as you seeing here, what this launch browser and with facebook.com. Okay, so you can see here the Chrome is being controlled by the automated test software. Okay, so now it is launched but it's not maximized, so I want to make it as what maximize. Okay, so you can write here what the code something or maximizing. Okay, driver dot manage dot, okay, window dot maximize. This is automation. Okay, so अभी क्या होगा कि जो ब्राउज़र है वो मैक्सिमाइज भी होगा, क्योंकि हमको ये भी टेस्ट करना है। मैक्सिमाइज पे मैक्सिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज पे मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज पे क्लिक करने के बाद। ओके, नाउ लेट अस सी, या इट्स अ मैक्सिमाइज। ओके, सो द टेस्टर वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग। ओके, ये सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, so everything we have to check. So this is what automation, right? So Selenium, we are using the Selenium is the most powerful web driver, okay, for the automating the test cases. The scripting language we are using here, which one? Java. Okay, so at least we have to know some knowledge about oops concept in Java. Okay, basic knowledge होना चाहिए, इतना हाई फाई नॉलेज नहीं होना चाहिए, एज ए डेवलपर की तरह नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। oops concept और basic things, basic understanding of Java, that is required. ओके, अगर आपको वो भी नहीं पता होगा लेकिन सी प्लस प्लस आता होगा तो भी इनफ है। ओके, वंस वी गेट स्टार्टेड विद द ऑटोमेशन टेस्टिंग, आपको लगे कि मुझे जावा कम आ रहा है, सो यू कैन आप लर्न कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, सो द फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो interviewer will be asked which framework you work, okay, which framework you use in your during this project. Okay, और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने या आपके टीम में आपने कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है क्या। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फ्रेशर एज वेल एज अ एक्सपीरियंस। ओके, so that they will ask one question, so about the framework, which framework you use during the automation, as well as do you know, have you designed any framework? Okay, or are you the part of the framework designing? Okay, so ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो इतना डीप में नहीं जाने का। एज आई एम ए फ्रेशर, एज ए इंटर्न, सो आई हैव नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द framework designing, but I know how to design the framework. Okay, but we I am using only the test-ng framework, आप ये ऐसे बोल सकते हो। so the test-ng framework I am going to cover, okay, in automation testing. So test-ng framework is very important. Okay, so test-ng is for what? Java. ठीक है, अगर आप पाइथन में स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, ओके, सो PyTest इज अ टूल इज देयर। ओके, वो फ्रेमवर्क है। so we are covering here what? test-ng framework, so that is enough। okay, then the build management tool we are covering here, which one? Maven. Okay, Maven tool with the POM, project object model। okay, Maven, so all the projects are using the Maven project। okay, Java project जो है वो Maven tool ही use करते हैं। build management tool है, this is what build management, so no need to add a dependencies। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, what is dependency क्या है ये हम देखेंगे जब हम automation पे work करेंगे, don't worry। Then we are using here what? DevOps tools, these are what? DevOps tool, Maven, Jenkins। okay, Jenkins, what is a Jenkins? It's an automation server। okay, CI/CD is the pipeline, continuous integration, continuous delivery or deployment। okay, so CI/CD
As a automation tester, SDET, okay, SDET, so you have to know this DevOps tool, that is very important. Then GitHub, okay, GitHub tools, okay. Also I'm going to cover the GitHub tools, okay. Maven, Jenkins, GitHub, okay, 1122 hours classes I will cover here, don't worry. Then as a SDT you must have to know basic knowledge, okay. No need to go for the high-fi knowledge about the Jenkins and GitHub, because remote repository, अभी जैसे हम कुछ भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो एक सर्विस रिपोजिटरी चाहिए, है ना। तो आप जो जितना जितना भी आपने काम किया वो आपको सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कि सर्वर रिपोजिटरी, ओके। एंड दिस इज़ अवर लोकल रिपोजिटरी। तो यहाँ से हम जो वर्क किया आज वो यहाँ पे जाना चाहिए, और कल हमको जो वर्क करना है, जो भी चेंजेस हुई है, ओके, ये आप है, ये दूसरा हुआ है, ये तीसरा है, सो दैट इज़ व्हाट बिल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट इज़ व्हाट वर्जन कंट्रोल। तो इन्होंने वर्क किया, फिर वो सेंट्रलाइज बन गया सर्वर पे, ओके। सो देन यू कैन डाउनलोड अगेन, यू कैन वर्क एंड देन पुल पुश, है ना, ये वर्क करते रहेंगे हम यहाँ पे। सो इट्स अ सर्विस सर्वर रिपोजिटरी। सो हाउ इट कैन डू दैट वन, ओके। सो ये भी आपको पूछते हैं एज अ बेसिक लेवल, ओके, आपने कैसे वर्क किया उस पर, ठीक है। गिटहब दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट बीडीडी फ्रेमवर्क, ओके, बिहेवियर ड्राइवन development, okay. So BDD framework, so I am going to cover for the 1 hour session, okay. Cucumber, okay. So this is also very important, but as a fresher don't say I have the each and every knowledge. As a experience don't say I have work on everything, okay, ऐसा नहीं बोलने का कि मुझे पूरे इस पे वर्क किया। तो कोई भी एक ही फ्रेमवर्क पे वर्क करे, अगर आप बोलेंगे मुझे मैं टेस्ट एंड जी मावेन बस हो गया, और जेनकिन हमने ऑटोमेशन पे वर्क किया बस हो गया। कुकुम्बर इज अ डिफरेंट थिंग, okay. Cucumber is a different thing, right. Next I am going to cover API testing, okay. How to test the API, that is very important. API testing by using what manually postman tool, okay, postman tool, okay. So these are the things I am going to cover in manual as well as in the automation. So by uh, going with this training, so you can go with the 5+ experience, as a 5+ experience, okay. So manual testing में आप 2 से 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, ऑटोमेशन पे आप 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, okay. Practice more and more, you have to do the practice, okay. And the advantages, so I am going to provide what uh, real-time project scenario, okay. Then 6-month internship training, okay, for the freshers, as well as experience those who are from the other IT background. Those who are not from the IT background, I can also provide a 6-month internship certificate, okay. And course completion certificates also provided, don't worry, ओके। जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे 1 मंथ हो गया है, आप एज ए इटमेंट करके लगा सकते हो और आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो हियर आई एम गुणवंत मानकर एंड आई हैव द 12-year experience and I am an ISTQB certified tester, ISTQB certified, okay. Do you know what is ISTQB? It's an international standard board, okay. Those give the certification, right, for the testing board, okay. Then we can also provide what 100% job assistant for the job seeker, okay. Resume preparation mocks also I'm going to provide, okay. Resume preparation every Sunday we can take there, okay. And mock interviews एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, कैसे कैसे इंटरव्यूज के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस वगैरह, और रियल टाइम सिनारियोज कैसे वर्क होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इफ़ यू हैव द एनी एकेडमिक गैप, ओके, एकेडमिक गैप अगर है आपको, या फिर कुछ करियर गैप है, ओके, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फैमिली प्रॉब्लम से अगर आपने 1-2 साल गए होंगे, 1-2 साल ऐसे वेस्ट हो गए होंगे, तो उसके लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये आपको मुझे पर्सनली बात करना पड़ेगा, ओके। सो आई कैन से हियर, हाँ, सो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, ओके, हम एडजस्ट करके दे सकते हैं। नाउ हु कैन गो विथ, ओके,
who can apply for this course? So any degree, okay, those who are any degree, right? Final year students can also apply. Any graduate, okay, any graduate, any postgraduate, okay, any graduate. So BCA, MCA, MBA, okay, B, BTech, MTech, ME, MTech, okay, any degree and any branch, okay, any branch also you can apply any branch, and final year students also, that is very beneficial, okay. Final year students can also apply from any degree, okay. And if you want to check what are the job opportunity, let us go to the naukri.com. Okay, so you can write here what QA engineer or test engineer, okay, search. You can check here the qualification. Now here the 2 to 6 year experience is required, okay. So just I'm going to go through the details, okay. Job posting, what is asking, education, any graduate, any post graduation, any doctorate, okay. So there is no bar of the education, okay. So what is asking, experience in the software testing, okay. Banking domain we are covering, don't worry, okay. Communication skill, that is written and verbal, that is most important. Communication skill अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है, कम्युनिकेट करते आना चाहिए, वर्क विद ऑटोमेशन कुछ नहीं है, ओके. सो मोस्ट ऑफ थिंग यू कैन चेक, education is not bad, okay. Any graduation, any PG, sometimes they will ask BTech for any specialization, okay. Engineer लिखे है इसलिए, but most of they are ask any degree, any graduate, okay. So fresh MTech, college graduate or anything, okay. Any graduate, UG, PG available है, PG तो PG, UG तो any graduate, okay. So that is no tension, okay. And then if you are saying that I am very good and confident in the programming, then you can go for what, SDT engineer, okay. SDT अगर आपको बहुत अच्छा लॉजिक लिखना आता है, ओके, तो यू कैन गो फॉर SDT पोस्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन द टेस्ट. और अभी टेस्टर और डेवलपर ऐसा कुछ नहीं रहा, आप बोलेंगे यार डेवलपर को बहुत सैलरी रहती है, टेस्टर को कम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है. जितना डेवलपर को है आज के टेस्टर को भी उतनी सैलरी है, ओके. सो क्योंकि टेस्टर को अपडेट रहना पड़ता है न्यू न्यू टूल्स के साथ, बस जो भी नए नए टूल्स आते हैं वो पढ़ते रहना पड़ता है, ओके. दैट इज द थिंग. सो SDT, ओके, SDT टेस्ट ऑटोमेशन कंट्रोल, ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग, टेस्ट प्लानिंग, वेब टेस्टिंग, सिलेनियम, ओके. तो सिलेनियम ज़रूरी है, okay. These are the things. So don't take any tension about the job, okay. First get the knowledge, that is very important, okay. So these are the things we are going to cover in our manual and automation testing, okay. So if you have any query right now, so please ask me. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो मुझे, then I will start with the testing, okay. What is testing and all. सो फ्री फ्रैंक यू कैन आस्क मी, आप कैसे भी पूछ सकते हो, डोंट वरी, ओके. आप और कम्युनिकेट करना, बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलेंगे कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया तो बाकी के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ऐसा कुछ भी मत समझिए, ओके. बिकॉज आपको जॉब चाहिए तो वी हैव टू स्पीक, आपको बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ओके. कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. जॉब चाहिए, लोग हंसे कुछ हो उसका टेंशन मत लो, अपने लोग हैं यहाँ पे, ओके. सो अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप फ्री फ्रैंक मुझे पूछिए. और टेस्टिंग में कैसा चुप रहना नहीं है, आपको बातें करते रहना पड़ता है, डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, मेल करना पड़ता रहता है, ओके. जो भी बग्स आया, फिक्स हो, बग आया, डिफेक्ट आ गया, वो हमको
कम्युनिकेट से रिजॉल्व करना पड़ता है। और डेफिनेटली क्लाइंट विल आस्क यू, ओके, ईच एंड एवरी पर्सन द क्लाइंट विल आस्क, क्लाइंट आपको पूछता है कभी कभी, ओके, कि द बिल्ड इज रेडी, तो क्या अपन डिप्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं क्या, है ना। तो टेस्टिंग टीम को हमेशा पूछते हैं कि जब भी गाड़ी रोड पे उतारना है तो पहले टेस्टर का जो मैनेजर है, टेस्टिंग मैनेजर की है एश्योरेंस को, उसको पूछते हैं कि सब टेस्टिंग ओके है क्या, अभी हम रोड पे उतार सकते हैं क्या गाड़ी, रेडी टू सेल, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यूए जो प्रोडक्ट ओनर है, मतलब जो क्लाइंट है, वो हमेशा आपको पूछेगा। और डेली एक स्क्रम मीटिंग रहती है इंडस्ट्री में, ओके। सो वी हैव टू कम्युनिकेट, है ना। तो आपको पूछे जाता है कि कल आपने क्या किया, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन टुमारो। सो ये स्क्रम मीटिंग होती रहती है, ओके। सो आपको बातें करते रहना पड़ेगा, सो एज ए इंटर्न, एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट द टेस्टिंग यू आर गोइंग टू कवर, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टेस्टिंग, ओके। यस, ओके। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर्स, ओके। तो हम क्या टेस्ट करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? Yes, anyone? What is software? Yes, anyone? It's a automation, okay, right? So before the software, तो बिफोर सॉफ्टवेयर हमारा एरा कैसे था, युग कैसे था, है ना। तो सब हमको मैन्युअली करना पड़ता था, है ना। बैंकिंग में भी जाओ मैन्युअली, पासबुक रिटर्न वगैरह सब कुछ, है ना। कुछ मेंटेन करने के लिए ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं था अवेलेबल, राइट। सो मैन्युअली रजिस्टर पे हम लिखते थे, एंट्री करते थे, सब लिख के ऐसे लिखा पढ़ी का काम होता था, ओके। जैसे सॉफ्टवेयर आए हैं तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन वर्क करते हैं। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो एफर्ट है वो लेस हो गया है, राइट। सो जो भी सॉफ्टवेयर के बिजनेस, जिनके भी एसी का बिजनेस हो, कितने भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, बैंकिंग डोमेन है कुछ भी, उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना पड़ता है, ओके। सो द आईटी इंडस्ट्री दैट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक टीसीएस एंड अदर इंडस्ट्री, and there is a developer also, there is a tester. So tester, you have to test that application or software, okay. What is the need of software for the automation? Software is nothing but what, automation। फ्लिपकार्ट है, अगर हमको कुछ परचेस करना है, क्लोथ्स लेने हैं, है ना, कपड़े लेने हैं, ड्रेसेस लेने हैं, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ता है, दुकान में जाना पड़ता है ना। अगर हमको दुकान पे नहीं जाना है, हमारा जो कॉस्ट है वो बचना चाहिए वहाँ पे जाने का और आने का, है ना। तो घर में बैठ से हमको लेना है तो हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं और परचेस करते हैं, दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। और आपके घर पे वो प्रोडक्ट आ जाता है। सो थ्रू ऑनलाइन पूरी प्रोसेस आप वर्क करते हो, है ना। सो दैट इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर, इट्स एप्लीकेशन। सो वी हैव टू गो फॉर द टेस्ट दैट एप्लीकेशन, right? So it's what, collection of the programs where it will take the input from the user and it will do the some process and it will give the output, okay। सिंपल प्रोसेस। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते जाते हो, ओके। पहले क्या मांगते हैं आपको, जो भी हम सर्च करते हैं, ओके, फ्लिपकार्ट, गो टू द फ्लिपकार्ट, देन वी ब्राउज द आइटम्स जो हमको परचेस करना है, ठीक है। ब्राउज कर लेते हैं, जो भी हमको अच्छा लगे कार्ट में ऐड करते हैं, देन दिल आस्क, पेमेंट गेटवे पे लेके जाएंगे, है ना। जैसे हमको ये लेना है, इस पे क्लिक करेंगे, उसमें कुछ वेराइटीज़, कुछ फोटोज़ दिखाएंगे, जो भी है, बाय नाउ पे ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, ओके। देन पेमेंट गेटवे, एंड पेमेंट गेटवे, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हमको रिसिप्ट जनरेट हो जाएंगी और आपको बताएंगे इतने दिन में वो आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो सेलर है उसका भी टेंशन नहीं, पेमेंट उनके अकाउंट में चला गया है, प्रोडक्ट भी आपके पास आ जाएगा, दिस इज टोटली ऑथेंटिकेटेड, ओके। सो दिस प्रोसेस इज मैनेजिंग बाय व्हाट, software, that is what application, right? So we have to test this one, okay, ये हमको टेस्ट करना है। so output, what we are getting the output, that is what, receipt, है ना। पेमेंट करते हैं हम,
गूगल पे, फोन पे से लास्ट में क्या मिलता है हमको, रिसिप्ट मिलती है कि आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी, दिस इज द डिटेल्स ऑफ योर रिसिप्ट. ओके, सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? फोन पे, गूगल पे, these all are the application, these all are the softwares. Take the inputs and give the output. Okay, process and output. Then what are the drawbacks of the manual process? Right now I told, अगर मैनुअल प्रोसेस करते बैठेंगे तो हमको बहुत टाइम जाता है. अभी अज्यूम करो कि 20-30 साल पहले हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे था, है ना? और आज के टाइम पे अगर मुझे बैंक ऑफ इंडिया से लेके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर पैसा डालना है तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, वहाँ पे इनिशिएट करेगा, फिर उसके 2-3 दिन के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाएगा. ओके, और अब हम इंस्टेंटली कोई भी बैंक पे कहाँ पे भी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिकॉज ऑफ द यूपीआई, है ना? बिकॉज देर इज अ यूपीआई एंड एपीआई. एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दीज आर विच आर कनेक्टेड टू द विच अदर ईच अदर, है ना? प्रॉपरली कनेक्टेड है. अ, और हम इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो मैनुअल प्रोसेस में टाइम जाता है, सो टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज इट्स विल टेक द लॉट ऑफ टाइम, मैक्स टाइम फॉर द मैनुअल. लिखते रहो, है ना? अभी मान लीजिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चेक करना है और मुझे वहाँ पे 10 डेटा डालने हैं, यूज़र डेटा, टेस्ट डेटा, 10 टाइम्स. ओके, तो मुझे 10 टाइम्स वो काम करना पड़ेगा. ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 टाइम्स, राइट? ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फेसबुक का. ओके, और मुझे यहाँ पे 10 यूज़र का डेटा टेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 बार ABC पहला यूज़र, ये यूज़र, फिर साइन अप. ओके, फिर दूसरे 10 टाइम आपको करना पड़ेगा. वही अगर हम ऑटोमेशन से बात करेंगे, एक स्क्रिप्ट लगा देंगे, डेटा प्रोवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज अबाउट ऑटोमेशंस, है ना? मैनुअल में बहुत टाइम लिखेगा, राइट? देन मोर एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड. अभी आपका बिजनेस है, मैनुअली आप कर रहे हो, सो दैट इज रिक्वायर्ड मोर एम्प्लॉय, क्योंकि पूरा रजिस्ट्री मेंटेन करो, सब मेंटेन करो, है ना? कितना प्रोडक्ट गया, सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सब रिटर्न मेंटेन करना पड़ेगा. देन कॉस्टली, इट विल टेक द, बिकॉज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय आएंगे तो कॉस्ट जाएगा, सैलरी देते रहेंगे, है ना? देन व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर? सो इट विल रिड्यूस द टाइम, राइट? बिकॉज द ऑटोमेशंस, right, we can maintain the software, okay, everything. And you know that now is day of the AI. Okay, AI, artificial intelligence, chat gpt on the boom, right? And maximum work will be done by the chat gpt. अगर आप टेस्टर हो, आप बोलेंगे आई वांट टू नो द सिनेरियो फॉर द इंश्योरेंस डोमेन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको चैट चैट जीपीटी दे देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, देन इट विल रिड्यूस द ह्यूमन रिसोर्सेज. 10 लोग लग रहे हैं हमको मेंटेन करने के लिए, तो हम 5, 2, 3 लोग ही रखेंगे, जो सिस्टम जिसको कंप्यूटर आता है उनको लगा देंगे, है ना? जिनको नॉलेज है कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर, हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर, बस हो गया. सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. इंश्योरेंस डोमेन देख लीजिए, एवरीथिंग देख लीजिए, बैंकिंग डोमेन, अभी सब सॉफ्टवेयर से काम चल रहा है, क्योंकि ऐप्स आ गए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग है, राइट? देन इट विल सेव द कॉस्ट ऑल्सो. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक आदमी को वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका पेट्रोल का खर्चा लगता है, वहाँ पे आना है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट सेव द कॉस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज टेस्टिंग? दिस इज आवर पॉइंट. ओके, सो ये सब ठीक है, कस्टमर है, क्लाइंट है, उनका प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, और उनके लिए उनको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बिजनेस एनालिस्ट है, ओके, दोज इज द बिजनेस एनालिस्ट, वो क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, राइट? रिक्वायरमेंट लेने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से SDLC मॉडल फॉलो करते हैं. ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. ओके, ये फेजेस रहते हैं. तो रिक्वायरमेंट ले लिया, एनालिसिस हो गया, डिजाइनिंग करो, कोडिंग करो, देन टेस्ट करो, एंड देन इम्प्लीमेंट करो. Okay, so in that SDLC models we are in the testing phase, okay, to test that application or software or project. Then what is testing? Testing is not a finding the bug. This is totally wrong answer. Okay, so जैसे आपको क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज टेस्टिंग, टू फाइंडिंग द बग, हम क्या बोलते हैं कि फाइंडिंग द बग. बग मीन्स एरर, है ना? एरर फ्री, एरर वगैरह, डिफेक्ट, फाइंडिंग द बग. ओके, दिस इज नॉट अ टेस्टिंग. यस, finding the bug is not a testing. Okay,
testing is what we are going to check whether the system is working as per the client requirement or not. That is what is testing. Okay, so test द डेवलप एप्लीकेशन जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उसको हम टेस्ट करते हैं, राइट? टेस्टिंग द एप्लीकेशन. सो नाउ ओके, दिस इज व्हाट Facebook. Okay, this is the application. So I want to test the application. So what we need to do? We need to check everything. First of all, URL. Okay, URL. If once we hit the URL, the home page will be open. Okay, then this Facebook logo in the middle of the web page, that will show in the middle of the web page. Then create a new account label should clearly display. Then it will display this form, okay, with having the credential text field, okay, with the first name, last name, okay, that will display placeholder, everything, password, okay, enable, right? Everything want to display. Then click the sign up. Okay, if you don't insert anything, then you can click on this sign up. That is what negative testing. Okay, this is known as negative testing. Okay, so everything is working as per the requirement or not. So how you will get the client requirement? ठीक है, ये जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा ही चाहिए, वो वैसा ही है क्या? दैट इज व्हाट क्वेश्चन. ओके, सो हाउ we'll get that requirement? So what is testing? To check whether the application is working as per the requirement or not. Okay, तो as per the requirement वो वर्क हो रहा है कि नहीं. So how we get the requirement? That is the most important question. तो आपको requirement कहाँ से मिलता है? कंपनी, है ना? So once you वहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट में डालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? KT. ठीक है, what is KT? Do you know? Whenever you are assigning the project, okay, जब भी आप प्रोजेक्ट पे असाइन होते हो तो आपको एक KT दिया जाता है. If anyone know what is KT? Yes? No. Okay. I don't know. So knowledge transfer. Okay, that is what knowledge transfer. This is the training, knowledge transfer training. Okay. So आप फ्रेशर जाओ या 10 या 15 साल के एक्सपीरियंस पे जाओ, ठीक है, आपको केटी देना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट में आ रहे हो, मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का वर्क नेचर अलग रहता है, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स अलग रहते हैं. वही सेम प्रोजेक्ट वो अलग वे से बनाते हैं. इंश्योरेंस देखो, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, हर एक कंपनी के अलग एप्लीकेशंस रहते हैं, कुछ फील्ड्स मैंडेटरी रहते हैं, कुछ फील्ड्स उसमें नहीं रहती है, राइट? सो द नॉलेज ट्रांसफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपको प्रोजेक्ट पे असाइन करते हैं तो आपको एक बडी रहता है आपके पास, जैसे आपका टेस्ट लीड है, टीम लीड है, या जो फ्रेंड है, मतलब कंपनी में जब आप एक टीम में 9 मेंबर की टीम में या 11 मेंबर की टीम में आप जाते हो तो आपके पास एक बडी रहता है. तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उनको आप पूछ सकते हो. ओके, दैट इज व्हाट बडी, है ना? सो आज फ्रेशर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको तो ट्रेनिंग फ्री मिल जाएंगी, नॉलेज ट्रांसफर. तो दे विल गिव द व्हाट डोमेन नॉलेज. ओके, सो पूरा डोमेन नॉलेज देता है कि हमारा प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस का है, ओके, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सब वहाँ पे रहता है. ओके, आपको एक नॉलेज दिया जाता है वेदर यू आर द डेवलपर और टेस्टर. ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है और उसमें आर्किटेक्चर आपको दिखाया जाएगा. ओके, प्रोवाइडर कौन है, पेयर कौन है ना, पॉलिसी होल्डर कौन है, आपको पूरा बताया जाएगा नॉलेज. आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे. सो दैट डॉक्यूमेंटेशन इज नोन एज FRS और FRD. ओके, देन अगेन वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नोन एज SRT. Again, third type, okay, documentation, that is known as which documentation? BRS. Okay, here is what BRS or BRD. These are the most important terms. Okay, as you can go with the interview. अगर आपको पूछेंगे, देखो ये लॉन्ग फॉर्म पे कुछ नहीं वर्क करता है. इंटरव्यूअर आपको डायरेक्टली आस्क करते हैं, व्हाट इज BRD, ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज BRD, व्हाट इज FRS, व्हाट इज FRD, है ना? आपको ऐसे पूछेंगे, डू यू नो FRD. आप पूछ रहे, आप बता रहे मस्त, व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, मस्त आंसर दे रहे हो, एक नंबर. ओके, बहुत अच्छा लग रहा है.
लेकिन क्या होता है कि जब भी आप बहुत अच्छा आंसर देते हो ना तो आपको इंटरप्ट किया जाता है बीच में, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर करता है, ठीक है। अगर आपको उनको आपने पूछा व्हाट इज़ रिग्रेशन, आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि बिल्ड आता है, फिर बिल्ड वेरीफाई होता है, स्मोक टेस्टिंग होती है, फिर जब बिल्ड स्टेबल होता है फिर सैनिटी टेस्टिंग होती है, फिर रीटेस्टिंग होती है, फिर हम रिग्रेशन टेस्टिंग, फिर उसमें क्या करते हो इंटरप्ट कर देते हैं। अच्छा, हाउ यू नो हाउ टू गेट द रिक्वायरमेंट्स, आपको कैसे पता चलता कि रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है ना, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो कैसे पता चलता। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो दैट इज ऑल दिस थिंग इज अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट्स, ओके। एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स रहता है, एक फोल्डर रहता है, आपके सारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रहते हैं। दैट इज व्हाट बी आर एस, ओके, एफ आर एस एंड एस आर एस। तो बी आर एस जो होता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। व्हाट इज द बी आर एस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और डी फॉर डॉक्यूमेंट, बोथ आर सेम, ठीक है। कुछ कंपनी बोलती है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कुछ कंपनी बोलती है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दिस इज द एमएनसी स्टैंडर्ड, ओके। सब एमएनसी स्टैंडर्ड है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओके, बिकॉज आई एम एसटीक्यूबी सर्टिफाइड। सो एफ आर एस, सो दैट इज नोन एज व्हाट, अब ये बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, इट्स अ बिजनेस एनालिस्ट। ये कौन क्रिएट करता है, बिजनेस एनालिस्ट, ओके, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। ये जाता है रिक्वायरमेंट लेता है क्लाइंट की, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेता है और वो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो बीआरएस डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, बीआरडी या बीआरएस। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। सो दिस डॉक्यूमेंट that is used for what, as a tester, okay। सो ये डॉक्यूमेंट हम कौन यूज़ करते हैं, टेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज आल्सो डेवलप बाय द टेस्ट एनालिस्ट एज वेल एज test sorry manager, okay। Then this document will be provided, okay, don't worry, this document company will be provided. So functional requirement specification, then functional requirements mean what, we are going to test the functionality। टेस्टर का काम क्या है, फंक्शनल टेस्ट करना है फंक्शन। जैसे अभी मान लो कि यूजर नेम है, सॉरी पासवर्ड है, पासवर्ड 8 से नीचे नहीं होना चाहिए और 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, 8-1 करते हैं और 12+1, अगर ये होता है तो फॉल्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ओके। चेकिंग द फंक्शनलिटी वेदर इट इज वर्किंग एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट, दैट इज अ टेस्टिंग, ओके। डोंट से टेस्टिंग इज फाइंडिंग द बग, हम बग फाइंड नहीं करते हैं, ओके। हम चेक करते हैं कि वो जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है वैसा वो वर्क कर रहा है क्या, अगर जैसा रिक्वायरमेंट है ऐसा वर्क नहीं कर रहा है तो वो बग है, ठीक है, दैट इज अ बग। तो functional requirement specification, so from this document you will get the requirement, ठीक है, you will get the requirement, okay। So tester use this, okay, tester you can say the refer, okay, you have to refer this document most of the time। So आपको मैंने बताया कि git and github, so लोकल रिपोजिटरी एंड सर्विस मतलब सर्वर रिपोजिटरी, है ना। तो वहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन चेंज होते रहा तो वहाँ पे आपको अपडेट रहते रहना पड़ेगा सर्वर से, है ना। जो भी चेंजेस होते हैं, ओके, वो यहाँ पे आपको डेली यहाँ से डाउनलोड करते जाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ पुल कमांड वी यूज़, ओके। तो यहाँ पे कैसा कि कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, बिजनेस एनालिस्ट कुछ डॉक्यूमेंट में चेंज कर देता है, तो हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेक करना है। समटाइम ये कभी क्या होता है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 थी और मिनिमम 12 हो गई, तो फिर कुछ चेंज कर देते कि मैक्सिमम 14 कर लो भाई, 8 से 14। तो ये हमको पता होना चाहिए, हम क्या टेस्ट करते रहते हैं 8 से 12 में, सो हमारा वो फिक्स हो जाता है, मतलब हम रॉन्ग हो जाते हैं उसमें, तो हमको रूट कॉज एनालिसिस डेवलपर क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका बग, है ना। तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए हमको क्या है, डेली लॉगिन करते समय हमको सर्वर से रिपोजिटरी से हमको वर्क करके चेक करते रहना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट
दिस ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विल कीप्ट इन द वन फोल्डर। ये सब एक सर्वर रिपोजिटरी पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनको चेक करना है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज व्हाट, सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कैसा कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जब यूजर नेम पे क्या डालना है, पासवर्ड पे क्या है ना, ये सब जो फील्ड है वो रिक्वायरमेंट है। ये देखो, दिस इज फंक्शनल। ओके, सो कभी डेट ऑफ बर्थ डाला तो ऑटोमेटिकली आपका एज कैलकुलेट होना चाहिए, दिस इज व्हाट फंक्शनल। ओके, दिस इज फंक्शनल। विल डू द फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्टर will always do the functional testing. Okay, then software requirement specification, okay, or document. So who use this document, ये कौन यूज करेंगे डॉक्यूमेंट बताइए, who will refer this document? Developers. Yes, good. So it will refer the developers. ओके, इट्स अ डेवलपर रिलेटेड। तो डेवलपर ये डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि मैं जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैंने जो एक मॉड्यूल बनाया लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है कि नहीं। ओके, सो आई एम शोइंग यू द FRS। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Okay, so see here, FRS, Insurance Management System, functional specification. Okay, so what are the contents? Insurance Management System that they having the requirement देखिए, तो ये functional requirement है। ओके, सो दिस इज व्हाट टेस्टर हम इसको यूज करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वैलिड CO यूजर ID पासवर्ड। वैलिड, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं वैलिड मतलब वो पॉजिटिव टेस्टिंग। ओके, नेगेटिव टेस्टिंग मीन्स इनवैलिड क्रीडेंशियल एंटरिंग। ओके, सो यहाँ पे सब क्लियर है। इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन होम पे क्या दिखना चाहिए, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, ब्रांच नेम एक्सेप्टेड 4 to 15 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, दिस इज व्हाट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। चार से नीचे नहीं, 15 के ऊपर नहीं। ओके, लोकेशन एक्सेप्ट 3 to 15 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, ये फील्ड्स है, फील्ड्स। ओके, देन स्टेट एक्सेप्ट स्टेट, ओके, एक्सेप्ट 2 to 15 अल्फा न्यूमेरिक। ओके, दिस इज फंक्शनल। सो हमको जब भी हम टेस्ट करने जाते हैं तो ये पेज हमको टेस्ट करना है, तो हम ये फंक्शनल डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जैसे अभी एडमिन होम पे जा रहे हैं, है ना, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलिसीज, जैसे हम पॉलिसी पेज पे जाएंगे तो दिस पेज विल हैव द लिंक पॉलिसी रजिस्ट्रेशन, वो इच एंड एवरीथिंग यू हैव टू चेक, मतलब हर एक आपको चीज़ आपको टेस्ट करनी है। ठीक है, बराबर लिंक वर्क कर रही कि नहीं, है ना, पॉलिसी मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो इनपुट क्या क्या डाल रहे हैं आप वहाँ पे, सो एज पर द रिक्वायरमेंट। सो इनपुट लेते समय क्या होना चाहिए, ऐड पॉलिसी डिटेल पेज, है ना, ओपन होना चाहिए, तो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी होना चाहिए। पॉलिसी नेम एक्सेप्ट दिस वन, देन पॉलिसी टर्म ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसी अमाउंट आना चाहिए, फेस अमाउंट मस्ट बी न्यूमेरिक। ओके, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सिंबल एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे अमाउंट है ना, ये सब चीज़ें आपको टेस्ट करनी। दिस इज FRS। तो जैसे हम एज अ टेस्टर आई कैन यूज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सो एवर वी आर द फंक्शनल टेस्टर। तो आप खुद को फंक्शनल टेस्टर भी कह सकते हो। ठीक है, आप रिज्यूमे में फंक्शनल टेस्टिंग ही डालना है। अब दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको बताता हूँ, SRS जो डेवलपर है वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, दिस इज वर्जन 1, सो वर्जन हमेशा बिल्ड का चेंज होते रहेगा, दिस इज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ओके, so for the document ID, this one, okay, this is prepare someone, and we can see here the contents. So let us check today what the project introduction objective, what is your main objective. Okay, so यहाँ पे आपको दिया जाता है कि हमको ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव वैसे, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम कैसी होनी चाहिए, हमारी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, पॉलिसी मैनेजमेंट वट एवर नीड फॉर दिस पर्पज, शॉर्ट इंट्रो। जैसे प्रोजेक्ट असाइन होता है तो ये सब आपको बताया जाता है। देन द मॉड्यूल्स, ओके, CEO, एडमिन, ओके, मैनेजर, एजेंट और कस्टमर, ये आपके 4 मॉड्यूल रहने वाले हैं। तो डेवलपर को ये पता चल रहा है। ओके, सो डेवलपर अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट इट इज राइट टू कोड। ठीक है, तो ये फ्लो आपको यहाँ पे पता चल जाता है डेवलपर को। सो टाइप्स ऑफ पॉलिसी कैसे रहेंगी। ओके, तो ये डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन नॉलेज। तो मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा, कितना परसेंट है आपका, प्रीमियम पॉलिसीज क्या था, यूजर मैनेजमेंट। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट, तो डेवलपर वो वर्क करेगा उस पर, ठीक है, और वो डेवलप करेगा।
Again, I am going to show you the banking domain project document. So this is basic documentation. Okay, so you can understand this one. ऐसे ही वर्क होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, ऐसे डॉक्यूमेंट बनते हैं और चेंज होते रहते हैं वर्जन्स. ओके, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, वर्जन भी चेंज होते रहते हैं. ओके, सो फंक्शनल डॉक्यूमेंट. सो ये जो फ्लो डायग्राम्स है, ओके, सो एडमिन का टास्क फ्लो कैसा है, ये भी एक्टिविटी डायग्राम्स आल्सो अवेलेबल. ओके, तो ऐसे एक्टिविटी डायग्राम्स वगैरह रहते हैं. तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक्टर क्लिक्स द ब्रांचेस. ओके, सिस्टम डिस्प्ले द ब्रांचेस डिटेल पेज, है ना. रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, एक्टर ने क्या किया और रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, अगर एक्टर ने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या दिखना चाहिए. ओके, सो दैट इज एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो according to work, so developer is going to write a code and tester is going to test as per the functional requirement. Okay, so that everything we are going to cover, don't worry. Okay, so these terms are very important: BRS, FRS, and SRS. Okay, so in interview they will definitely ask what is BRS, what is FRS. Okay, so how do you know the requirement is changed by the client. Okay, आपको कैसे पता चला, तो आपको सीधा बोलना है कि FRS से. Okay, that is very important. ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मतलब रिक्वायरमेंट लेना क्लाइंट से, आपको बनाना क्या है. ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेंगे. ठीक है, एडमिन पेज कैसा रहेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन पेज कैसा रहेगा, वो कैसे डिटेल्स ऐड करेंगे. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वो डेवलप कैसे करेंगे. ओके, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. ओके, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उनका फ्लो कैसे रहेगा, यूज केस डायग्राम कैसे रहेंगे, फ्लो कैसे रहेगा. ओके, दैट इज दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन व्हाट इज टेस्टिंग नाउ. To develop, test the develop application whether it is working according to the client requirement or not. Okay, अकॉर्डिंग टू जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्क होना चाहिए. अगर उसने बोला कि 2+5 7 होता है ना. अगर मान लो कि 2+5 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट कि 2+5 9 आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. अगर आपका 2+5 7 आता है तो वो बग हो गया, क्योंकि आपको 9 ही आना चाहिए. ठीक है, डेवलपर ने वैसा वर्क करना चाहिए. दैट इज बिकॉज डिपेंड ऑन द फंक्शनलिटी कि एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट ने जैसे बोला वैसा ही रिक्वायरमेंट होना, तो FRS डॉक्यूमेंट्स हमको मिलता है. अगर आप अजाइल फॉलो कर रहे हो तो यूजर स्टोरी रहती है. ठीक है, यूजर स्टोरी, प्रोडक्ट बैकलॉग्स कहते हैं उसको. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्टिंग, मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन, दैट विल डिलीवर व्हाट, क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, वी ऑलवेज इंश्योरिंग द क्वालिटी. ठीक है नहीं. अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है, कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाया है, उसको बिना टेस्ट किए आपने डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्या हो जाएगा. अच्छा निकला तो ठीक है. हाँ, लोग हमेशा खामियां निकालते हैं. ठीक है, क्योंकि वो निकालना बहुत ज़रूरी है. जब तक वो नहीं निकालेंगे ना, बाकी वाला आदमी स्ट्रांग नहीं बनेगा. राइट, तो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, पता चलेगा अरे अच्छा नहीं है, ब्रांड खराब हो जाएगा, है ना, नाम भी खराब हो जाएगा. इसलिए क्या करते कि 100 टाइम्स दे विल टेस्ट. ओके, कैसे भी टेस्ट करते, डिपेंड ऑन द एंड यूज़र. एंड यूज़र कैसे यूज़ करेगा, कैसा वो सोचेगा. जैसे अगर मैंने बाइक लॉन्च की है, वो बाइक क्या सोचेगा, उसको मैं 120 की स्पीड दी है, वो 200 की स्पीड के ऊपर भी ट्राई करेगा, कुछ भी कर सकता है वो, है क्या नहीं. तो वो ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक दिया, वो कैसे वर्क करेगा. कुछ भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लो, तो वो कितना यूज़ कर सकता है, कैसे वे से यूज़ कर सकता है एज अ एंड यूज़र, कुछ भी सोच सकता है एंड यूज़र, है क्या नहीं. वो तो लैपटॉप लेगा, कम से कम वो अ, फेंक के भी चेक कर सकता है. स्मार्टफोन वो ऐसा फेंक के भी चेक कर सकता है, वो तो पानी में भी डाल सकता है, इसलिए वाटर प्रूफ भी फ़ोन निकाले, है क्या नहीं. यूज़र स्टोरी वैसे आई थी, क्योंकि हम नहाते नहाते भी हम फ़ोन यूज़ करते और गिर जाता पानी में, तो फिर वाटर प्रूफ भी निकालो, है ना. दैट इज़ रिक्वायरमेंट. सो इंश्योरिंग द क्वालिटी, the main objective is what, ensuring the quality, that is very important. Then ensuring the correctness होना, है ना. करेक्टनेस मीन्स व्हाट, कि हम एक कैलकुलेटर बनाए और वो रॉन्ग आंसर देना है क्या नहीं. सो दिस इज नॉट अ गुड टेस्टिंग. तो वो करेक्ट आंसर जब तक नहीं देंगे तब तक उसको हम क्वालिटी पास नहीं करेंगे. अगर आपको मान लिए कि एक बाइक बनाई है, आपको पता है कि वो
10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसके, या फिर 5,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर खराब हो रहे हैं, या फिर उसकी जो रेंज होंगे वो पहले से खराब हो रहे हैं क्योंकि उसके पहले से वो टायर बराबर नहीं है, तो करेक्टनेस नहीं है उसमें, तो भी अपने पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद जो भी है उसकी लाइफ खराब हो गई और टायर खराब हो जाएगा, है ना, वो फेल हो जाएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। सो एज अ क्वालिटी मैनेजर you must have to ensure the correctness as well as ensuring quality, करेक्ट होना चाहिए, ओके। देन इंश्योरिंग द रोबस्टनेस मीन्स स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स इंश्योरिंग दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रांग। जब तक डेवलपर ने अपना काम कर दिया, आपका काम है उस एप्लीकेशन से वेरियस वे पे टेस्ट करना, यूजर डेटा देना, निगेटिव डेटा प्रोवाइड करना, वेरियस टाइप से प्रोवाइड करो, है क्या नहीं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करो, लो इन नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से प्रोवाइड करो, डिफरेंट ब्राउजर में ओपन करो, एप्लीकेशन वर्क हो रही कि नहीं, है क्या ना, हाउ इट इज स्ट्रांग। जैसे अभी हमने इन डेटा एंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया और वो बहुत टाइम ले रहा है, एंटर ही नहीं हो रहा, है क्या नहीं, पेमेंट गेटवे पे अटक अटक गया, अब देन व्हाट, पेमेंट यहाँ से डिडक्ट हो गया लेकिन आगे वाले को पहुंचा ही नहीं और मेरे पास वापस आया भी नहीं, है क्या नहीं, तो दैट इज ऑल्सो द थिंग। सो वहाँ पे कैसा, 1 to 1 नहीं, 2 to 1, ओके, एक तो दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ से पेमेंट कटा तो उधर रिसीव्ड होना चाहिए, ठीक है, अगर उधर रिसीव्ड नहीं हुआ तो रिटर्न होना चाहिए, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी ये ये लगानी पड़ेंगी ऐसे टाइप की, तो वो स्ट्रांग होना, रोबोटनेस, रोबोस्टनेस, ओके, दैट इज इंश्योरिंग दिस रोबोटनेस, इंश्योरिंग द रिलायबल, ओके, दैट इज व्हाट, रिलायबल, यूजर फ्रेंडली रहनी चाहिए एप्लीकेशन, यूजर फ्रेंडली, है क्या नहीं, तो न्यू न्यू कस्टमर आते हैं। अभी देखो फेसबुक पे किसी को, आप पता है कि अभी फेसबुक पे जो जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो मतलब वो पढ़े लिखे भी नहीं, वो भी फेसबुक पे है ना, गांव के लोग भी है जो मतलब जिनको नहीं आता है तो भी वो फेसबुक पे वर्क मतलब अकाउंट है उनके, क्यों, ये यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली, यहाँ पे क्लिक करो, मराठी में आ जाता है, अपने लैंग्वेज में आते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे कृपया यहाँ पे अपना नाम डालिए, वो नाम डालेंगे, अकाउंट बना देंगे और यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट यूजेबल, रीयूजेबल, यूज़र फ्रेंडली, इट्स रिलायबल, है क्या नहीं, सो रिलायबल है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है, एंड बग फ्री, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट्स योर नेम, ओके, द ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ये भी आना चाहिए, दैट इज व्हाट नेगेटिव टेस्टिंग। तो वेरियस वे से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर द मोर देन 25 टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो, ओके, वेरियस सिनारियो हम लिख सकते हैं, यही टेस्टर का काम है, सिनारियो टेस्ट केसेस निकालना और उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, मैनुअल टेस्टर टेस्ट सिनारियो लिखेगा, टेस्ट केसेस निकालेगा और उसको ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं दैट इज नोन एज टेस्ट डेटा, okay, so everyone should have to use this one, that is what reliable, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ओके, यूजर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इजीली होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मोर important quality, okay, that is what ensuring the product is bug free before the shipment release, ठीक है, तो जैसे हम रिलीज करते हैं प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, वो हमेशा बग फ्री होना चाहिए, सो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्टिंग, वहाँ पे कुछ भी टाइप के बग नहीं होने चाहिए, वो फिक्स होने चाहिए बग, जो भी बग आया होगा वो फिक्स बिफोर द प्रोडक्शन, ओके। एक बार वो प्रोडक्शन पे चला गया, ठीक है, उसके बाद फिर बग आते हैं तो हमको फिर उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है अपनी, ओके, वर्क बढ़ जाता है, ठीक है, और उसको आओ रिपीट वो साइकिल करो, उसके बाद और वर्क करो उस पर और डिप्लॉय करो, सो इसीलिए हमारा, जैसे पुलिस भी हमेशा बोलते हैं, पुलिस क्या बोलते हैं कि क्राइम होने के बाद उसको शिक्षा देने से अच्छा वो क्राइम ना हो, ये इसके ऊपर हम इंश्योर करते हैं, वो क्राइम होने से बचे, ठीक है, मतलब क्राइम हो जाए और उसको पकड़ो और उसका शिक्षा दो, वो उनका काम है, उनका सोचने का ये है कि क्राइम ना हो, ये देखो कि वो कैसे हम क्राइम ना हो सके उसके लिए हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो वैसे हमको बग ना आए, और बग आए तो पहले ही निकालो, ठीक है, एट द प्रोडक्शन टाइम पे अगर बग आते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट टेस्ट, ये सबसे बड़ा रोल रहता है यहाँ पे टेस्टर का, कि आप कितना अच्छे से एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन का जो टाइमर है या प्रोडक्शन का जो
पूछे जाते हैं तो टेस्टर को पूछा जाता है सबसे पहले, डेवलपर को नहीं पूछते हैं। क्लाइंट डेवलपर को नहीं पूछते कि हम आर यू रेडी, वी आर हाउ यू रेडी फॉर प्रोडक्शन। सो टेस्टर टेस्टिंग मैनेजर जो रहता है वो आंसर देते हैं, और टेस्टिंग मैनेजर अपने टेस्टिंग टीम को पूछते हैं कि all this requirement are fulfilled, all these bugs are fixed, everything is okay, shall we are you available to release the production, है ना। तो ये पूछते हैं सब कुछ चीज़ें, तो अभी हम रेडी है क्या प्रोडक्शन के लिए। सो सभी ने बोला कि हमने अच्छे से टेस्टिंग की है, सब कुछ बराबर है, देन द क्लाइंट दे गिव द आंसर टू द क्लाइंट, यस वी आर रेडी। ओके, उसके बाद ही प्रोडक्शन पे जाता है। सो दिस इज द मेन प्रोसेस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव द टेस्टर। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, एज अ टेस्टर हमको सब कुछ टेस्ट करना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, सो व्हाट इज टेस्टिंग? So we are going to test the application whether it will working as per the client requirement or not. Okay, this is the standard answer. So don't say testing is finding the bug. Whether the application is working as per the client requirement or not, this is the testing. Okay, so yes, anyone have the question, please ask me. So if you have any question, so please ask anyone.